Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a very important topic, that is NISAR mission, because it is going to be launched today at 5:40. So, and this is very interesting. The reason is because ISRO is involved in this mission along with NASA. So I'll discuss this in detail about NISAR, that is NASA's ISRO Synthetic Aperture Radar mission. Okay. So am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes in the comments. Am I audible, visible? Everything is fine? Okay, yes. So I'm sure you must be aware that today is 30th July and at 5:40 p.m. Indian Standard Time, IST, this satellite NISAR mission will be launched from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. Okay, and this will be the first joint satellite of ISRO and NASA. Okay, that is what you should be knowing. And I hope till now you are aware that ISRO is India's government space agency and NASA is US government space agency, right? I'm sure you must be aware of this. Okay, so let us begin with the first question. I'll discuss some questions and I'll discuss theory regarding this also. NISAR mission is a joint initiative of NASA and ISRO for what? Navigation, Earth observation, solar observation, finding the evolution of universe. What is the speciality of this mission? क्या खास है इसमें? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इस मिशन में का मेन मकसद क्या है आपको बताना है. Yes, let me find out. Yes, Hari, Priyanshi, Riva, Adoks, you are right. Earth observation satellite. कहीं कहीं पे लिखा होगा remote sensing तो भी चलेगा, but I think the most perfect answer is Earth observation. Okay, so B is the right answer to this question. Now, when you read the Wikipedia page of NISAR, that is NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Mission, it says that it is a joint mission of NASA as well as ISRO to launch a dual frequency. Okay, this is also the first time we are having a dual frequency, that is in L band and S band. Okay, we will discuss it. Synthetic aperture radar on an Earth observation satellite. So this will be an Earth observation satellite. First radar imaging satellite to use dual frequency, means two frequencies. Okay, one will be in L band, another will be in S band. So it will be used for remote sensing to observe and understand natural processes on the Earth. Okay, so that is why I've said if the word remote sensing is mentioned, that is also correct. So the idea behind this is, I will explain in detail, but currently I'm giving a rough idea. Here is the Earth. So here is the satellite. The satellite will sense, the remote sensing means away from the Earth, it will be away from the Earth, of course, but it will sense the Earth. The idea behind it, like for example, rough terrain, ice, melting of ice. Okay, if there is any forest fire happening on the Earth, if there is any oil spill that happened in an ocean or something like that, it will get to know, okay, from the space. Remote मतलब दूर से sense कर लेना है ना. Like yes, geological mapping, yes, very good. है ना, जैसे मोबाइल रिमोट होता है टीवी में, तो आप दूर से बैठ के चेंज कर लेते हो. That's the idea, right? Now it is said yes, they will research about Antarctica's cryosphere. ये क्या होता है? What is this? Anyone? What is the meaning of cryosphere? With a total cost of $1.5 billion, NISAR is likely to be world's most expensive Earth imaging satellite. So हो सकता है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो. $1.5 billion is somewhere around रुपीस में आप करोगे, so 12,000 करोड़ से भी थोड़ा सा ऊपर ही आएगा, है ना. If $1 is 80 rupees, तब आएगा 12,000 करोड़, और उससे अगर थोड़ा ज्यादा है तो you can say like that. If $1 is 80 rupees, then it is 12,000 crore. What is cryosphere? Now I'll tell you, cryo word will come twice in this class. CRYO. आपने कभी word सुना है? Cryo preservation. Have you heard this? Cryo preservation, cryo करके. Yes. Cryo मतलब होता है जो extreme cold, extremely frozen, right? Yes, Aditi Singh, very good. Huh? So cryosphere is that portion of the Earth which is completely freezed. So basically it is talking about Antarctica, where there is actually the top layer is filled is covered with the snow.
So that will also be researched if there is any melting of ice that is happening or something like that is happening. That will also be researched. So that's called as cryosphere. Okay, let's move on to the next question. NISAR will be launched today, that is by 5:40 p.m. Indian Standard Time, by which launch vehicle? And I have put the photo in front of you also. Long March 5B, GSLV F-16, PSLV C-37, SSLV S-49. Yes, very good. GSLV F-16. Can anyone tell me the full form of these three? Because it's a PYQ of ALET, I think. ये पूछा था एक बार. Long March 5B, this is a rocket used by China. Yes, GSLV is Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. ठीक है. PSLV is Polar Synchronous, है ना? Polar Satellite Launch Vehicle. हाँ, Polar Satellite Launch Vehicle. And SSLV is Small Satellite Launch Vehicle. Small Satellite for Launch Vehicle. Yes, very good. Krishi says Deva, Priyanshi, Goel, you are right. Good. So you should be knowing the full form. So B is the right answer to this question. So in this class, I will focus little bit more on GSLV because it is in the news because of this reason. So B is the right answer to this question. आप देख सकते हो इसरो ने लिखा है GSLV F-16 post integration reaching its last pre-launch position, right? है ना? तो लगा दिया गया है ना? Here it has been installed. So that is what you should be knowing. Okay. Now GSLV F-16, which is being used for launching NISAR mission, is GSLV Mark 1, Mark 2, Mark 3 और HRLV. कौन सा वाला है? Mark 1 है, Mark 2 है, Mark 3 है, HRLV. Which one? अच्छा, एक चीज और बताइए, इसमें कितने स्टेज होते हैं? यही सब पूछेंगे एग्जाम में. Because what they do in CLAT is they will not ask straightforward question. They sometimes go in detail. कि चलो और पूछते हैं परेशान करने के लिए, है ना? तो कभी कभी टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछते हैं. So Mark 2, this is GSLV Mark 2. जो GSLV Mark 3 है, MK3 ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में. It is also now known as LVM3, Launch Vehicle Mark 3. और इसी का अपग्रेडेड वर्जन जो इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जाएगा so that humans can go into the space, and this is called as human rated launch vehicle to be used by GAGAN mission, which will be India's first manned mission. ठीक है, इतना तो पता होगा. Okay, so the right answer is B, GSLV Mark 2. This is GSLV Mark 2. देखो यहाँ पे भी क्रायोजेनिक बात आ गया, but वो क्रायोस्फीयर है. This is a layer of, like, this is a portion in the earth where you will find layers of ice, but here cryogenic engine is being used. So HRLV, human rated launch vehicle, कहाँ चला गया? Human rated launch vehicle. This is actually a sort of a GSLV Mark 3 only. Next generation launch vehicle भी, right? है. अच्छा, आप ये बताओ, देखो ये वाला है जो अभी फिलहाल के लिए, we are not going in detail of other launch vehicle, but this one is actually being launched from for NISAR mission. ठीक है, सबसे पावरफुल अभी इंडिया के पास ये वाला है. Mark 3 is the powerful one. It has 2 straps on, बस इसके पास 4 straps on होते हैं. Straps on समझ गए, जो साइड में लगाता है उसको कहते हैं straps on. Straps on. Okay. So GSLV Mark 2 1, 2, 3, 4 I think होता है ना? So that is what you should know. It has having cryogenic engine. Please tell me one thing. How many stages it has? इसके पास कितना स्टेज है? Stage. I mean, how many stage engine it has? ये पूछेंगे पक्का, ये सब पूछ सकते हैं बिल्कुल. चलो मैं गिव ऑप्शन दे देता हूँ. 2 stage, 3 stage, 4 stage, 5 stage. How many stage engine are there? Stages कितना है इंजन का? एक स्टेज में नहीं लॉन्च होता, इतना तो पता ही होगा. Like, I'm waiting for the response. What happened? कोई तो जवाब दे दो. Yes, Riva and Hari, वो तो right. 3 stage होता है, ठीक है.
पीएसएलवी में 4 स्टेज होता है, जीएसएलवी में इस समय 3 स्टेज। सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन होता है, ठीक है, तीन स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज है सॉलिड, तो जब फ्यूल होता है वो सॉलिड फ्यूल होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में लिक्विड स्टेज होता है, और थर्ड स्टेज होता है क्रायोजेनिक इंजन होता है। सारा खेल इसी का था, मोस्ट पावरफुल इंजन टिल नाउ। इस पर काफी मेहनत लगी है, नो अबाउट क्रायोजेनिक इंजन। इंडिया हैज वर्कड वेरी हार्ड टू अचीव दिस। और क्रायोजेनिक क्यों, ये देख लो, क्रायोजेनिक। अगेन क्रायो मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम कोल्ड, एकदम ठंडा, राइट। LOX LH2 मतलब लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन, क्या मतलब हुआ? आई थिंक -200 समथिंग डिग्री सेल्सियस पर रखा था इनको। सो बेसिकली व्हेन यू कूल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर गैस, बट व्हेन यू कूल टू मच इट विल बिकम अ लिक्विड, ठीक है। सो -200 समथिंग डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ओके। So it becomes a liquid oxygen and liquid hydrogen which is used in the third stage called as cryogenic engine, ठीक है। तो 3 स्टेज हुआ, there are 3 stages and it has 4 straps on, देखो उसमें लिखा होगा कहीं पे 4 liquid straps on। किसकी बात करें हम? GSLV F-16, राइट। 3 stages and 4 straps on। straps on किसको कहते हैं? इसको, ये जो साइड में लगा हुआ देख रहे हो, ये वाला 1 2 2 is visible, straps on, and 2 is on the back side, of course you cannot see because it is a 2D image। तो 4 ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। Why I'm saying, because GSLV Mark 3 में 2 ही लगे हुए हैं, you should see it carefully, right? Mark 3 has only 2 big ones, but GSLV Mark 2 has 4 small straps on, ठीक है। We are coming to that, FL music, we are coming to that, है ना। Everything I'll discuss now। So basically today is 30th July, 5:40 hours and 17:40 मतलब 5:40 PM we will see this। So Mr. Jitendra Singh, the Union Minister for Science and Technology, Minister of State, has written this। So basically है ना, from Sriharikota will be launched, and this will be an initiative to ensure Vishwa Bandhu, and a global partner that contributes to the collective good of humanity। ये term याद रखिएगा, Vishwa Bandhu। So India becoming Vishwa Bandhu, so that India can help for the collective good of humanity। Why? Because NISAR mission will be helping. This will provide actually data regarding how to fight disaster management, whether there is the cryospheres are melting, whether the oil spills have happened to the entire humanity, ठीक है, to the rest of the world also, ठीक है। इसीलिए विश्व बंधु कहा जा रहा है, ठीक है। Now, so what ISRO has tweeted, sees through the clouds and darkness। Yes, मतलब ये निसार जो है क्लाउड और डार्कनेस क्रॉस करके देख लेगा, ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट द आइडिया इज। रडार इमेजिंग यूजेस डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। इट विल बी हेल्पफुल फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए क्यों हेल्पफुल होगा? थिंक, अप्लाई द लॉजिक। इट विल हेल्प अस प्रेडिक्ट लेट्स से मॉनसून इन अ मोर बेटर वे, मॉनसून, साइक्लोन एटसेट्रा। यस, देन साइंटिस्ट को भी हेल्पफुल होगा, ऑफ कोर्स साइंटिस्ट को तो खैर बेनिफिट होगा ही। डिजास्टर मैनेजमेंट में यस, because it will help us predict, let's say where the cyclone has happened or how much damage has happened, how much the earth is subsiding or something like that, okay। Yes, it will empower earth observation like never before। yes, GSLV F-16। let's move on। तो हाँ, आप देख सकते हो जैसे इन्होंने वीडियो डाली थी, they have put the video और ये सब इमेज लगाए थे, जैसे मान लो ये है कि जो ठंड में आता है ना, पोलर रीजन में you will see find actually winds, then forest fires को भी डिटेक्ट कर सकता है। then of course if there is a floods, if there is any earthquake happen, इस अभी earthquake आया, yes right, 8.8 earthquake, yes someone has written also। then of course avalanche, then it can find out floods, give us the data regarding it, how much area has been damaged। कभी कभी क्या आता है, फ्लड आता है तो क्या आता है कि chief ministers goes through the helicopter to check how much area has been affected with flood। so these informations will be easily provided by these satellites, ठीक है, निसार, ठीक है, ओके। तो इसमें काम कैसे करेगा, देखो इनका ये है, दिस एक्चुअली इज डायमीटर इज 12 मीटर, ओके। तो इस तरह कुछ यहाँ सिग्नल भेजेंगे और इट विल गो टू द अर्थ, इट विल कवर, ये खुद तो 12 मीटर डायमीटर है, लेकिन अर्थ में एक बार में ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर रेंज कवर कर लेंगे। दैट इज व्हाट यू शुड नो, ठीक है, ओके, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। सो यस, एस बैंड and L band, these are the two bands being used। S band provided by ISRO and L band provided by NASA, ठीक है, okay।
सो एस बैंड से प्राइमरली सरफेस लेवल की चीज देख पाएंगे, ऐसे समझ लेना, ऐसे सरफेस, और एल बैंड से स्लाइटली वी कैन गो एंड सी इनसाइड, लिटिल इनसाइड द अर्थ, ठीक है, तो थोड़ा सा इन डेप्थ वी कैन सी, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट, अ रफ आइडिया इज मोर देन एनफ, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। सो यस, आप देख सकते हो जिसका एंटीना है वो 12 मीटर वाइड है, ओके, डायमीटर, ओके, और ये जो लगा होता है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, सोलर पैनल टू गेट द एनर्जी फ्रॉम सन एटसेट्रा, एंड एल एंड एस बैंड लगा हुआ है, ओके, दैट इज मोर देन एनफ, यू शुड बी नोइंग, है ना। एल एंड एस बैंड, माइक्रोवेव, दे विल सेंड माइक्रोवेव टू कैप्चर द इमेज एटसेट्रा, दिस इज व्हाट यू शुड नो। और इसके अलावा और क्या क्या चीज, हाँ, इट विल फाइंड आउट द ग्लोबल लैंड आइस कवर्ड सरफेस इंक्लूडिंग आइलैंड, सी आइस, सेलेक्टेड ओशन, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, एवरी 12 days, in 12 days it will cover the entire earth, मैं दिखाता हूं कैसे, entire earth as it is placed in sun synchronous orbit, कौन से ऑर्बिट में प्लेस है, sun synchronous, I will show the images, nothing to worry. So it will cover, since it is placed in sun synchronous orbit, orbit का नाम है sun synchronous, so that is why it will cover the entire earth in 12 days. इसमें 740 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस होगा, लिखा होगा ना 747, I'll come to that, ठीक है। तो ये हो गया। so इसमें क्या क्या मेजर करेगा, बायोमास वगैरह मेजर कर लेगा, है ना, कि ट्रैक चेंजेस, वेटलैंड्स, ग्रीन लैंड एंड अंटार्कटिक आइस शीट, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट क्रायोस्फीयर। It can read whether climate change is really impacting or really causing reduction in what we call it as ice sheets, yes or no, is it leading to melting of glaciers, seismicity यानी earthquake भी पता कर लेगा, volcanic eruption, landslides, subsidence यानी जो जमीन अंदर धंस जाती है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, जोशीमठ में एक बार हुआ था, जनवरी 2023, there are reports that there have been some slip subsidence. So these are the things. Subsurface aquifer, subsurface मतलब जमीन के अंदर, aquifer means where the water is stored beneath the earth, like underground water. Hydrocarbon reservoirs inside the earth, and these will be done of course by L band provided by ISRO, और surface level पर S band से काम चलेगा, ठीक है, that is what you should be knowing, okay. So थोड़ा सा जमीन के अंदर भी जाके, subsurface inside the earth also it can see, okay. These are the things you should be knowing about. फिर अब हम इसमें जान लेते हैं इसके जो डायमीटर है 12 मीटर, ये हमने बता दिया, जो ये है, this that the width is of this antenna is 12 मीटर, ओके, है ना। एक बार 240 किलोमीटर रेंज तक देख लेगा, है ना, मतलब आप समझ गए ना, आई होप इट्स क्लियर। जैसे लेट्स से यू आर सेंडिंग द सिग्नल समथिंग लाइक दिस, तो एक बार में एट वंस इट कैन सी अप टू 240 किलोमीटर वाइड रीजन, ओके, वंस में, ठीक है। ऐसे 12 days में इट विल कवर द एंटायर अर्थ, 12 दिन में पूरा अर्थ का सारा पोर्शन कवर कर देगा, ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो। इट इज इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, आई विल शो यू, एंड 747 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। देखो अर्थ से कितनी दूरी है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, 747 किलोमीटर, सो ऑलमोस्ट यू कैन से 750 किलोमीटर, ऐसे समझ लेना, 750 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। नाउ सन सिंक्रोनस, देखो ये है ना, सन सिंक्रोनस मिशन बताया से, तो ये इक्वेटर है, आर यू एबल टू सी, दिस इज इक्वेटर, तो इसके ऐसे क्रॉस जाएगा ऊपर से नीचे ऐसे, लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज सन सिंक्रोनस। बट यू विल से कि सर हाउ विल इट कवर इन 12 days, तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, अर्थ ऐसे भी तो घूम रहा है, अर्थ इज मूविंग वेस्ट टू ईस्ट, यस, सो इन 12 days इट विल कवर द एंटायर अर्थ, एंड अगेन आफ्टर 12 आई मीन इन द 13th day इट विल कम बैक टू द सेम पोजीशन, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे घूमते जाएगा और ये अर्थ घूम रहा है, तो इट विल कवर इन द एंटायर अर्थ इन 12 days, दैट्स द आइडिया, ओके। इट इज यूजिंग GSLV Mark II, ओके, यस, आप देख सकते हो, तो ये इसके क्लोज इमेजेस, आई विल शो यू द वीडियो, तो आप उससे समझ जाओगे और अच्छे से। देखो ये देखो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये इट इज मूविंग, तो 12 days में पूरा अर्थ कवर हो जाएगा, दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, ओके। सो इट विल चेक कि ice sheets पिघल रहा है कि नहीं, and etc. and all these things, okay. So let me write the credit has been given to ISRO, so it will find out whether how about the earthquakes, volcanoes, etc. or any disaster happens, so I mean this will be helpful, this mission will be helpful, that is the idea behind this NISAR mission, okay.
है ना। इसमें क्या देखो पहाड़ी ऊंचा नीचा बता देंगे, मतलब टेरेन्स पता चल जाएगा कि कितना ऊंचा है या कितना नीचा है. दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, राइट, है ना. So it will tell you forest fires if there is happening, if there is landslides happen anywhere or something like that, then this mission will inform us, have to collect the data and send it to the earth so that we can it will be easy for us to fight disaster management, etc. That is the idea behind this, है ना. So this is it is having 4 straps on 1 2 3 4 आप देख रहे हो. So this is actually in Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. Okay, it will be launched at 5:40 today. Okay. Yes, it's having 12-meter diameter, है ना. देखो ये सब चीज बता देगा, अर्थ कितना सबसाइडेंस हुआ कि नहीं, अर्थ का या राइज हुआ कि नहीं. These are the things it can tell us. Okay, that's the idea behind this, है ना. तो वेदर प्रोटेक्शन में भी हेल्पफुल होगा एंड मेनी अदर थिंग्स में दिस वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर अस. देखो वोल्केनो इरप्शन कहां पर हुआ, कितना डिस्टेंस पे हुआ, कहां तक जाना ठीक है ना. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच विल बी एक्सप्लेन्ड with the help of this. That is the idea. Now, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जोशीमठ एक जगह थी, जनवरी 2023. इट सैंक 5.4 सेंटीमीटर. आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस हुआ था 2 years back, almost 2.5 years back. That जोशीमठ is a place in उत्तराखंड. So इसमें क्रैक्स दिखने लगे थे, cracks were shown in the houses. So ISRO came up with the report that it has submerged 5.4 centimeter. तो इसी टाइप की चीज को और in a more perfect way, like what is the job of NISAR? इसको और परफेक्ट वे में कर दें. Okay, that is the main job. इसको मतलब it will give more better quality pictures. That is the idea behind it. Although this type of thing we already have, Earth observation satellite already in India के पास है, but this will be of more better quality. That is the idea. ठीक है. F-16 से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, SHAR भी लिखते हैं, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज और सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा. Please tell me it is in which state of India? बताइए. And please tell me the lake that is adjacent to this island. दोनों बताइए. I'm waiting for the response. Yes, Priyanshi and Chandralekha, you both are right. Andhra Pradesh. So this is Andhra Pradesh. This is Tamil Nadu. Yes, let's me zoom it. तो ये जो बॉर्डर देख रहे हो, ये वाला आंध्र प्रदेश हो गया, ये वाला तमिलनाडु हो गया. There is a lake, एक लेक है which touches both the states. उस लेक का नाम बताना है. Polycat Lake. Very good. Polycat Lake. It touches both तमिलनाडु and आंध्र प्रदेश. और जूम कर देता हूं, देखो ये है ना, this is the border. ये वाला तमिलनाडु, this is sorry, ये वाला आंध्र प्रदेश, this is तमिलनाडु. This is the lake, Polycat Lake, touching both Andhra Pradesh and Tamil Nadu. And this is an island, Sriharikota. Sriharikota Island. This island belongs to Andhra Pradesh, not Tamil Nadu. ठीक है. Don't say कि, but lake is touching both the states, but this island, Sriharikota Island, Satish Dhawan Space Center, Sriharikota High Altitude Range, this belongs to Andhra Pradesh state. Please remember it. It is very, very important. I have seen this type of question many times in the exams. एक बार तिरुपति टेम्पल मिलेगा, तिरुपति सिटी. Okay, so these are some of the things I have taken. देखो ये सब वही दिखा रहे कि L band से लिया हुआ इमेज है. Earlier NASA has taken images like this. Yes. अब देखो क्या क्या फर्स्ट है, यही क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन. These are 3 first. First 2 nations 1 mission. 2 nation means India and USA, है ना. ISRO and NISAR. ISRO and NASA. First dual band. Dual band means there are 2 bands. L band frequency वाला जा रहा है और S band 2 frequency. Radar से satellite. First GSLV to SSSO. अब देखो और से ये क्या है? Sun synchronous orbit. I have shown you what is sun synchronous orbit. Generally in sun synchronous orbits, PSLV satellites are sent. PSLV launch vehicles are sent. Generally. ठीक है. सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे जब भी भेजना होता है तो पीएसएलवी भेजते हैं. जीएसएलवी जनरली नहीं भेजता, बट दिस टाइम वी आर सेंडिंग जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. इज इट क्लियर? एंड दिस इज फर्स्ट इसरो एंड नासा अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन. दिस इज द फर्स्ट मिशन, है ना. ये 3 फर्स्ट याद होना चाहिए.
हाँ, एल बैंड नासा ने बनाया, यूएस ने। यस सर, आप एक इंडिया एंड चेस पे क्लास ले सकते हैं कवरिंग ऑन रिलेवेंट स्टैटिक महासागर। अच्छा, आई एम सेविंग योर सजेशंस, जब भी हमको मौका मिलते जाएगा आई विल ट्राई टू टेक द क्लासेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखो ये फोटो डाला है इसरो ने, है ना, आप देख सकते हो, दिस दे हैव पुट दिस फोटो, उन लोगों ने फोटो डाला है। दिस इज, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम इट, इट्स ग्रेट। ओके, यस। तो इसमें क्या है, देखो मैं आपको अगेन बताता हूँ, इनका जो डायमीटर है ये 12 मीटर है, लेकिन जो ये रेस भेजेगा वो अर्थ के 240 किलोमीटर तक, 240, अरे यार क्या हो रहा है, दिस इज 12 मीटर, but it will cover in one go, it will cover 240 kilometer of earth, ठीक है। okay, yes, you can see these images, yes, so it will be helpful। ये statement मैंने देखा exactly नासा वालों ने लिखा बोला था, so that is what I have exactly put here। this statement is given by NASA। NISAR will help us better understand, फिर ये सब videos images डाला था उन्होंने, earthquakes, volcanoes, wildfire, this is flood, okay, this is landslides and this is oil spill, L छुड़ी, हाँ oil spill समझते हो ना, जैसे मान लो क्या oil spill is quite dangerous, for example कोई शिप जा रही है, मान लो let's say oil tanker is going from Saudi Arab, let's say to Australia, I'm just giving example, oil tanker है, ship है, and it let's say it got submerged or because of some reason, तो यहाँ पे oil spill हो जाएगा इस पूरे region में, and this will cause a lot of problem like it will harm the marine environment। तो कैसे पता चलेगा कौन से रीजन में हुआ फॉरेन, सो इट विल एक्चुअली, दिस सैटेलाइट कैन बी हेल्पफुल एंड इट विल गिव अस द इंपैक्ट आल्सो, दैट हाउ मच मैरीन लाइव्स हैव बीन इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ओके, और अभी हैव सीन टुडे दैट वी हैव सीन इन द मॉर्निंग दैट 8.8 अर्थक्वेक हिट रशियास कामचाटका पेनिनसुला के आसपास, तो आप देख सकते हो कामचाटका पेनिनसुला, यहाँ दिस इज कॉल्ड एज कामचाटका पेनिनसुला, इसी के आसपास आया इवन जापान, और यहाँ पर हवाई आइलैंड है अमेरिका का, दैट इज आल्सो इट इज सेड गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज काफी पावरफुल है, 8.8 आया इन दिस रीजन, ठीक है। सो इफ पॉसिबल अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट वीक में शायद आई शेड्यूल अ क्लास, लेट अस सी। सो सुनामी का अलर्ट भी आ गया कि मे बी व्हाट इज सुनामी, हाउ इट विल बी इंपैक्टेड, वी विल डिस्कस इट इन सेपरेट क्लास, ओके, यस, है ना। और क्या क्या चीज में हेल्पफुल हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट दे हैव टोल्ड यू, है ना, ये सब नासा की वेबसाइट से मैंने निकाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, राइट, दैट विल बी हेल्पफुल। देखो ये कितना क्लोज फोटो लिया हुआ है ना, देखो लिखा है निसार सतमीव जयते, दिस इज आवर नेशनल एम्बलम, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, नीचे में सतमीव जयते लिखा है, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद, और ऊपर वाला जो हिस्सा है फर्स्ट हाफ, दैट दिस वी हैव टेकन फ्रॉम अशोकन पिलर, है ना, सारनाथ बनारस, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली, इसी के अंदर एक्चुअली टॉप में ही रखा होता है, आपको पता होगा ना, जो दिस इज द टॉप पोर्शन, इसी में सैटेलाइट होता है, मेन सैटेलाइट इज देयर ऑन द टॉप पोर्शन, द पेलोड, है ना, बाकी जो नीचे का हिस्सा होता है वो फ्यूल एंड मशीन एंड इंजन्स होते हैं, ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, दिस द मेन सैटेलाइट इज हियर इनसाइड दिस, ओके। सो दीस आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल इमेजेस यू कैन सी, है ना, इसका 12 मीटर विड्थ होता है ना, इसमें सोलर पैनल्स वगैरह हैं एक्सेट्रा। अब मैं थोड़ा सा इसरो पर क्वेश्चन पूछूंगा, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर, लिटिल बिट ऑफ अबाउट इसरो यू शुड बी नोइंग, प्लीज आंसर इट। And I hope it is very easy, please. It is directly under PMO's office. There is no ministry under it. Department of Space, under which ISRO is there. Department of Space, C is the right answer. Department of Atomic Energy तो बार्क वगैरह आ जाएगा, भाभा Atomic Research Center वगैरह. So C is the right answer. Yes. Krishi says Devash, Noor, Priyanshi, all right. And who is the chairman of Secretary Department of Space? Dr. V. Narayan. He is the new ISRO chairman since January. ये पता होना चाहिए. Navigation system developed by ISRO. बताओ तो. Anyone?
नेविगेशन सिस्टम, इस पे PYQ आया हुआ है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, डी इज द राइट आंसर। यस, अशनूर कौर, कृषि सर, देवा, प्रियंशी, ऑल द राइट। हाँ, और बाकी आप देख सकते हो ग्लोनास रशिया का है, बैदू चाइना का है, गैलीलियो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, एंड यस QZSS चाइनीज का है, जापानीज का है ना। ये बताओ नाविक कवर्स हाउ मच रीजन? इंडिया और इंडिया के आसपास, इट इज नॉट ग्लोबल इन नेचर, इंडिया और उसके आसपास कितना x किलोमीटर कवर कर सकता है? व्हाट इज दैट? देखो अदर्स आर ग्लोबल इन नेचर, जैसे GPS होता है, इट कवर्स द एंटायर वर्ल्ड, है ना, ग्लोनास सब। लेकिन दो जो एक इंडिया का है एंड अदर इज ऑफ जापानीज, दीस टू आर रीजनल, कुछ ही हिस्सा तक कवर कर सकता है। सो इट्स एक्चुअली 1500 किलोमीटर इज द राइट आंसर। यस, वेरी गुड। हाँ, वी हैव डिस्कस्ड इट, है ना। यस, दिस रीजन आप देख सकते हो आपके सामने है, तो इंडिया और इंडिया के आसपास, तो रफली अराउंड 1500 किलोमीटर, दैट्स व्हाट यू शुड नो। ओके, है ना। So we are done with this. ये हो गया, नाविक वगैरह हो गया। ISRO was earlier known as what? ISRO was formed in 1969. Before this, it was called what? Please tell me. Yes, in COSPAR 1962-63 के आसपास बना था, when Mr. जवाहरलाल नेहरू was the prime minister, and फिर बाद में ISRO बन गया। So chairman कौन थे यहाँ पर इन COSPAR के? He himself became the chairman of ISRO later on, है ना। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो या फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इनकोस्पार? इनकोस्पार was formed in 1962-63 के आसपास. This was later on renamed as ISRO in the year 1969. So who was the first chairman of इनकोस्पार? Yes, Aditi, very good. Krishi Sachdeva, Priyanshi, Ashnoor, Dr. Vikram Sarabhai sir. ठीक है, so 1962-63 he became the इनकोस्पार chairman. Later on, when ISRO was formed, the first chairman was again Dr. Vikram Sarabhai, and that is why he is considered as father of India's what? बताइए। हाँ, वेरी गुड, इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। और होमी जहांगीर भाभा सर के बारे में, होमी जहांगीर भाभा सर, फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम कहते हैं, एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। ओके, बाकी एपीजे अब्दुल कलाम सर तो बाद में आए ना, काफी लेट है ना। ओके, सो आप देख सकते हो, सो है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई इनकोस्पार मेरे, फिर इसरो मेरे, फिर और भी बहुत सारे लोग थे ना। एमजी के मैंने सतीश धवन सर वाज द थर्ड इसरो चेयरमैन, है ना। इनके नाम पर जो स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, बहुत फेमस। के कस्तूरी रंजन, ही डाइड रिसेंटली आई थिंक, है ना। देन जी माधवन नायर, डॉक्टर के राधाकृष्णन, शैलेश नायक, बहुत सारे लोग रहते हैं। एस किरण कुमार, मिस्टर के सिवन, सोमनाथ, मिस्टर एस सोमनाथ वाज टिल जनवरी दिस ईयर, नाउ ही हैज बीन रिप्लेस्ड विद डॉक्टर वी नारायणन। हाँ, के कस्तूरी रंजन रिसेंटली डाइड, राइट। हाँ, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, तो इसमें दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं, एक आध दो पीवाईक्यू भी आएगा, वी विल डिस्कस सम पीवाईक्यूज आल्सो। अब बताते जाओ, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट व्हिच ईयर, प्लीज टेल मी। आर्यभट्ट, व्हिच ईयर? इंडियन सैटेलाइट से पूछा जा रहा है, मतलब, बट इट वाज सेंट नॉट बाय इंडियन रॉकेट। हाँ, आर्यभट्ट, व्हिच ईयर? 1975, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 19 अप्रैल 1975, है ना, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको ये पहले आपको डिफरेंस समझना है। देखो, ये पूरा जो होता है, ये जैसे लगा होता है, इसको कहते हैं रॉकेट या लॉन्च व्हीकल। ये इंडिया का नहीं था, ठीक है। आर्यभट्ट जो मिशन गया था, उसमें जो अंदर में ये यहाँ पे होता है आर्यभट्ट, दिस सैटेलाइट वाज इंडियन, ये आपको समझना जरूरी, 1975 में। ओके, ये जो पूरा था, दिस वाज सेंट बाय सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। ओके, इज इट क्लियर? बिकॉज ये माइन्यूट चीज है और यहीं पे क्वेश्चन आता है। इट वाज सेंट बाय कॉस्मोस 3M व्हिच वाज अ रॉकेट ऑफ सोवियत यूनियन। ओके, अब देखो क्वेश्चन दूसरा क्या है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च, यानी पूरा समूचा सैटेलाइट भी हम लोगों ने भेजा लॉन्च, पूरा लॉन्च व्हीकल के साथ, along with the launch vehicle, not only that satellite, that payload, but the entire satellite, वो कौन सा था?
Yes, Riva, very good. The right answer is option C. Rohini RS1. Yes, Priyanshi, अब देख सकते हैं, है ना? Rohini RS1, India's first indigenous satellite launch, making it the 7th nation to possess the capability of sending its own satellite or its own rocket. ठीक है, अपना रॉकेट से भेजना सतीश धवन स्पेस सेंटर से. ठीक है, 1980 में किया गया था. Now I hope it's clear. ठीक है, ये सब बेसिक छोटी छोटी चीजें, और ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी. वी हैव डिस्कस्ड इट. सतीश धवन स्पेस सेंटर इज एक्चुअली इन आंध्र प्रदेश. वी हैव डिस्कस्ड दिस, वी हैव डिस्कस्ड, है ना? एंड देयर अदर टू आल्सो सैटेलाइट सेंटर्स. देखो, एक है फर्स्ट वाला, यही था थोम्बा. दिस इज केरला, but this is less prominent. The second one, the most famous, is Satish Dhawan Space Center, Andhra Pradesh. The third one is being built in Tamil Nadu. Year for Rohini RS1 देखा है तो 1980, 18 जुलाई 1980. Here it is. ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं. Which of the following was India's first communication satellite? इस पर PYQ आया है 2-3 years back. CLAT PYQ है इस पर based. First communication satellite. अब specifically those satellites होते हैं, communication, remote sensing, earth observation, navigation, right? So this one specifically we are talking about communication satellite. Was question ये आया था कि this satellite was launched from where? This is the question. The right answer is Apple. Launched from where? ये question था. B is the right answer. Okay, अब मैं आपको दिखाता हूँ, है ना? Apple देखो, the 19 June 1981 फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, राइट? और क्वेश्चन ये आया था, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2022 CLAT. एप्पल द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो लिख भी दिया उन्होंने, ऑफ इसरो वाज लॉन्च्ड फ्रॉम वेयर. अगर आपको नहीं पता होगा, आप सोचोगे इसरो है तो यही आंसर होना चाहिए, बट दिस वाज नॉट द आंसर. आप सोचोगे ये आंसर होगा, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था. जो आप सोचोगे वो था ही नहीं. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोरू, फ्रेंच गुयाना. ठीक है, सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर इंडिया है. तो मैं बताता हूँ एक चीज, ये फ्रांस देख रहे हो यूरोप में, दिस इज अ टेरिटरी ऑफ फ्रांस कॉल्ड एज फ्रेंच गुयाना. तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी यहां से बिलोंग करती, व्हिच इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, बट दे लॉन्च मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम हियर. कोरू इज अ प्लेस इन फ्रेंच गुयाना. व्हाई? Yes, but why is France interested in that territory? उसमें क्या खास बात है कि यूरोप से नहीं लॉन्च किया था, यहां से लॉन्च किया था? Can anyone tell me? So those who know the physics, even if you know the basic common sense, you can answer it. What is so special there? Near to sea, कह सकते हो, हाँ, that is one argument. But फ्रांस भी तो नियर टू सी है, नीचे में उसके भी तो सी है. ठीक है, मैं बताता हूँ, 2-3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे यू आर गोइंग नियर टू दैट. ठीक है, फर्स्ट कोशिश ये किया था कि इट शुड बी नियर इक्वेटर. सेकंड, इसमें ईस्टर्न कोस्ट हो तो ज्यादा अच्छा है. दीज आर द टू वेरी प्रोमिनेंट थिंग्स. हाँ, तो यहां से देखो, मैं बताता हूँ, एंड इट्स वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड इट. ये अर्थ है, तो जो इक्वेटर वाला हिस्सा होता है, यहां पर पॉइंट ज्यादा फास्ट मूव कर रहा होता है एज कंपेयर टू हियर, बिकॉज देयर इज अ बल्ज. So equator region में से ही लॉन्च किया था, near to equator. That is why even in India we have put it somewhere in South India that should be near to equator. आप देखोगे यहाँ पर ये है, यहाँ पे equator है. Second thing is, since Earth is moving in this direction, west to east, it is preferred that it should be in the eastern coast. So that God forbid, let's say यहाँ से rocket launch हुआ, it failed, so it will go in Bay of Bengal, because the Earth is moving in this direction and pseudo force will be applied on the eastern side. Class 9 में पढ़े होगे pseudo force. ये 11th में पढ़ाया जाता है. ठीक है, so if this is here and if this launches and it fails, it will found here. Similarly US में यहाँ पर फ्लोरिडा एकदम नीचे रखा है, क्यों? कैनेडी स्पेस सेंटर. why it is southernmost? Because it is nearest to the equator. Second thing, it is on eastern coast, so that if the rocket is launched, if it fails, it will fall here. नहीं, Coriolis force उसका रिजल्ट होता है, but actually the answer is not Coriolis force. The answer is the Earth is moving west to east. This is the reason, and it will give pseudo force. Okay, ठीक है, तो इसलिए so two reasons. एक होता है ईस्टर्न कोस्ट में प्रेफर किया जाता है, दूसरा नियर द इक्वेटर कोस्ट होना चाहिए. ठीक है,
That is why people, even जो इंडिया में बना था थुम्बा वाला यहाँ पे बना है. The next one which is happening in Tamil Nadu is also near equator. एवं तमिलनाडु में यहीं पे बनाया जाता है सारा इंडिया में. So do not complain. People of North India should not complain that why we do not have launch satellites or launching pad, because from geography point of view or physics point of view, it is advisable that we should keep it as south as possible near to the equator. ठीक है? खैर, तो ये बात है ना. ये फ्रेंच यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है. तो ये क्वेश्चन आया था पूरू से, आप देखो यहाँ देख भी सकते हो. एरियन 1 रॉकेट, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, फ्रेंच गाना. चलो आगे चलते है ना. Yes. Please tell me this. It is a satellite-based navigation system developed by ISRO for civil navigation. Right answer is GAGAN. इसका नाम is the right answer. चलिए पढ़िएगा कभी, ठीक है. So please read about GAGAN, GPS-aided geo-augmented navigation satellite system. Yes, Priyanshi, Arshnoor, you both are right. Basically 2022 में आए हुए थे. Indigo becomes first airline to land aircraft using indigenous GAGAN system. Okay. So we are ending this class here. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.